Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Colonel Kaushal Kashyap, Shaurya Chakra from the 21 Para SF. And in this interview, we'll try to understand his journey of joining the Indian Army, live in the Indian Army as a commando, and also he was part of NSG. And I will try to understand his experience across his career and learn some lessons from him. So thank you, sir, for coming on this interview and welcome. Thank you so much, Akash Raj, and also all the viewers of Military Mantra. I'm really honored and I feel privileged. Yeah, Thank you for having me here. thank you, sir. So, if you could tell us, how was your life before joining the Fauj, and if you could speak about your experience in the school and how were you before you actually joined the Indian Army? Yeah, I would say I was a very normal, common kind of a child. My family background is my father in the Arunachal government. He was a district veterinary officer, and good about 20 odd years we have been in Arunachal. My mother is a teacher, and she was a very strict one. So it was very difficult for us to fool her. And we were three brothers. The eldest was about 10 years older, so he was slightly हमसे थोड़ा सा वो कम था, but the other one, Kapil, he stayed in the army, uh, Kapil Kashyap, and we were like twins. We were almost like twins, and there has hardly been any time jab there's some place where he has been, I have not been, or I have been, he is. I don't remember going anywhere till about class 10th where he is not accompanied me. People knew us as Bada Wala Kapil Kaushal and Choda Wala Kapil Kaushal. And of course, being the youngest, I was the naughty ones, and we would pick up all types of problems, troubles, either there. And I have a lot of respect for mothers who are rearing two boys, two or three boys, because it's very difficult for them. So I was a very normal kind of a. I loved reading and studying. I did have kind of outdoor also, but I was not too great in sports. My brother was very good in sports. वो काफी अच्छा था, and I was so in sports, and otherwise I was pretty good as a student. Got it. And my house had a very motivated kind of a fervor, the environment there. My parents were extremely patriotic, मतलब बहुत ज्यादा. तो बचपन से हमारे अंदर ना वो देश के लिए वो जज्बा बहुत ज्यादा था. Hmm. And as I was making it, I made it into the NDA. There's no looking back. मतलब my parents would not think of anything else कि कुछ और कराना है इससे. Understood. So, if you could also speak about your SSB experience when you went for the your India entry, and if you could also tell us which year are we talking about? SSB was sometime around 98, Okay. the year 98. I had done my class 12, and after that I went for I joined through NDA, and SSB is like madhouse. There's so many aspirants और इतने जोश के साथ जाते हैं, and everybody is trying to prove that he's better than the other. I did have before that I would like to say my parents have had a lot of faith in me, and not just my parents, my guru also. I had taken a SSB coaching from Lieutenant Colonel Ramesh Kaushik. He Okay. was running a Garima Academy then. I think he's changed the academy's name. And I had done this training after I did my UPSC, the writtens, Hmm. and I was not sure when I'm going to get a call. So we were somewhere, we had gone for some attending some marriage party in one of the corners of Assam, extremely northeast me. We were with family and friend there, and suddenly I get a call that I have to come and join for SSB interview in Bangalore. Okay. And in 98, within 3-4 days, I had to actually fly down. And the flight cost, I remember it was 12,000 then, must be around 40-50,000 if you compare now. So Hmm. that was a huge thing for going for a SSB where one gets selected out of 10. Hmm. So I asked my parents, do you actually think कि I can make it या मैंने जाना है इतना पैसा खर्च करके? तो my father was all my mother again कि नहीं इंटरव्यू आया है और वो भी आर्मी के लिए, तो you have to go no matter what, आप जाइए. Then I called up Colonel Ramesh Kaushik ki sir, आपने तो कोचिंग कराया था, आपको लगता है do I actually stand a chance? He Hmm. said by all means you will get selected, you go. And so I flew to Delhi, I flew to Bangalore,
एंड फिर बैंगलोर में जा करके एज यू लैंड देयर एंड देन यू सी कि सब इतने अच्छे अच्छे हैं. देयर वर पीपल हु हैड नॉट मेड इट फॉर 3 टाइम्स, जो थर्ड अटेम्प्ट में, लोग फोर्थ अटेम्प्ट में आए थे. एंड वो इतनी अच्छी तैयारी कर रहे थे. मतलब आई वाज एक्चुअली फीलिंग एट सी कि मैं लॉस्ट हूँ यार. इनके साथ तो कंपैरिजन में आई डोंट स्टैंड ए चांस. मैं शायद कुछ नहीं वो कर पाऊंगा. मतलब एक एक ये दिस इज वेरी कॉमन. व्हाई आई एम टेलिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस, ये बहुत कॉमन है. आप कभी भी इंटरव्यू या कहीं जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब जो मेरे साथ कंटेम्प्रेरी जो मेरे साथ compete कर रहे हैं, दे एनी डे बेटर. बट आपको भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए. एंड वो सारे मेरे साथ थे. कोई पूछता है तू, तेरे को पता है नया टैंक आया है, इसका क्या नाम है, इसका क्या रेंज है. एंड देन आई वाज जॉइनिंग फॉर नेवी. तो उसके लिए somebody asked me कि ये फ्रिगेट का नाम क्या है, इसका क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है. आई had just no clue. I had just no clue. My general knowledge wasn't that good, so I had no clue and I was pretty वो कि शायद मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, होऊंगा नहीं होऊंगा. देन द ग्रुप डिस्कशन पार्ट 4. जब वो ग्रुप डिस्कशन होता है इन ए ग्रुप ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मस्ट बी अबाउट 8-9, क्योंकि वी वर जस्ट Yeah. 24. एंड वो सब बोलने का मौका नहीं मिलता. एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, एवरीबॉडी वांट्स टू पुट हिज पॉइंट अक्रॉस एंड आई वुडंट हैव स्पोकन फॉर 10 seconds या 15 seconds इन द ग्रुप डिस्कशन. तो मैंने तो उससे पहले सोचा था कि आई एम काइंड ऑफ गोइंग टू बी आउट. But there was a blessing that came. The something that came as a blessing was, there's a half group task. Half group task is when your group is generally split, दो में, and then you are, for all those who are not aware, you are given some kind of a obstacle. It's not a classical obstacle. There are two lines, दो लाइन होती हैं, उसके बीच में there are some kind of, there's a, let's say, a drum, Hmm. or there's a tile, and you can't step inside. आप उसके बीच में पाँव नहीं रख सकते. And you are giving some utility things like a fatta, a rope, and something like that. Hmm. और इनके मदद से you have to cross over. You have to help use these, and you have to cross over. So the group task that we got, the half group task that we got, there were two prominent axes. उसको क्रॉस करने के दो तरीके completely दिख रहे थे. एक तरीका वो था जिसमें जो पहला वाला स्टेप है वो बहुत ही इजी था. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, लेट्स से देयर वर 3, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 98 की बात है. तो Hmm. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप वाज लाइक वेरी इजी, सेकंड स्टेप वाज ओके, एंड द थर्ड स्टेप वाज देयर वाज नो गो टाइप. एंड द सेकंड वन, उसमें पहला स्टेप मतलब घुसने का ही आपको पता नहीं चल रहा था कि कैसे करना है. एंड इसके आगे जो था, मतलब यू कुड सी कि उधर से तो बिल्कुल हाईवे है. एंड आई टेल यू, क्लासिकल माइंडसेट एसएसबी के अंदर, एवरीबडी कोई फट्टा उठा रहा है, कोई रस्सी उठा रहा है, कोई और भी जो है आपके पास सामान सामान उठा करके. एंड विदाउट इवन द मोमेंट द इंस्ट्रक्टर सेड ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, दिस गाइस गो एंड ठक ठक ठक, फर्स्ट सेकंड, और आगे जा करके नाउ दे आर लॉस्ट कि अभी करना है क्या, करना क्या है. एंड आई वाज द ओनली वन, मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्या है. ठीक है, तो मैं पीछे बैठ के देख रहा था. देन आई रियलाइज कि ये, दिस इज अ फ्रॉड. फ्रॉड तो नहीं, मतलब दिस इज इज ट्राइंग टू ल्योर यू इनटू अ ट्रैप. Hmm. बिकॉज वो आसान है और आप फट से आगे निकल गए. एंड एवरीबडी वाज देयर. वो 4-5 लोग जो थे वो पूरा आगे तक पहुंच के वहां थे. एंड ये वाले में कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया, और मैं अकेला पीछे खड़ा था. देन आई टोल्ड हिम, हेलो हेलो हेलो, सुनो यार, ये आगे जा करके फंस जाओगे वहां पे, वो देख रहे हो कुछ नहीं है, जस्ट कम बैक एंड लेट्स ट्राई दिस. ये पहला स्टेप, जब आप 4 लोग सेफ जगह खड़े हैं करके, यू कैन गो देयर एंड देन यू कैन क्रॉस ओवर आराम से. एंड एवरीबडी केम बैक एंड दे डिड इट थ्रू द वे आई वाज ट्राइंग टू टेल देम. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि भैया, आई एम प्रॉब्ली इन, मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा. And my group task may not have been otherwise, Hmm. the may not have been too good. Interview was okay. Interview was okay. I could realize the interview was very nice, Hmm. and he gave me a lot of opportunities to actually prove कि मुझे Hmm. बहुत कुछ आता है. But then I wasn't too great. मतलब at the end वो मेरे से पूछने, एक सबमरीन था उनके ऑफिस में, बोलते ये तू ये बता देगा क्या है ये. Hmm. I said सर ये सबमरीन नहीं है, मुझे पता है. So it was like that. Very, but at the end of the day, I think it was that half group task and your normal contact. I don't even know because मैं उस फील्ड में नहीं हूँ. हम तो वो मिलिटेंट मारने वाले उसमें हैं, तो Hmm. exactly what the SSB guys look for. But Hmm. I'm so grateful कि I got selected.
Yes, what I would like to tell everyone, मैं ये इंसिडेंट इसीलिए बताया है क्योंकि लाइफ में आपको हर जगह ना यू हैव टू थिंक थ्रू। आपको पहले एक स्टेप टेक करके देर आर टाइम जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है लाइफ में आपको क्या करना है, तो वो आपके लिए एक पहला कदम लेना बहुत जरूरी है। हम्म। एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए। लेट्स से अभी मैं पोस्ट रिटायरमेंट आफ्टर आई हैव लेफ्ट द आर्मी, तो मेरे लिए अभी अगर मुझे समझ में नहीं आता कि नौकरी करना, ये करना है, वो करना है, स्टार्टअप बहुत मुश्किल है, ये है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पहला स्टेप लूँ। आई शुड टेक द फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट। आई हम्म। शुड स्टार्ट। बट अगेन, इफ यू कैन, यू मस्ट गिव द एंटायर थिंग अ थ्रू। जब आपको दो तीन रास्ते दिखते हैं, ये नहीं कि आप पहले स्टेप लेकर के आप सिर्फ not have short sightedness कि हम्म। we'll just looking at the short term goal कि यहाँ तक मैं अचीव कर लूँ। you should look at the long term कि इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। when you are preparing for any interview, when you are preparing this, I realized much later, आर्मी में एक स्टाफ कॉलेज होता है। हम्म। You have to study like about 1 year completely, और उसके बाद एंड आप अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके चांसेस ऑफ प्रमोशंस एंड वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा होता है, मतलब जो भी आर्मी में के अंदर अच्छा कर रहा है, ही हैज टू क्लियर स्टाफ कॉलेज, ही जनरली शुड। आई रियलाइज दिस मच लेटर, मतलब ये था अंदर बट उस भाव में नहीं था। तो व्हेन आई स्टार्टेड अपेयरिंग फॉर द स्टाफ कॉलेज एंड आई मेड इट, देन आई रियलाइज कि व्हाई डिड आई गेट सिलेक्टेड। इट इज द ऑर्गेनाइज्ड थॉट। हम्म। एक चूहे को अगर आप एक बड़ा चीज का टुकड़ा खाने के लिए दे देते हैं और आप उसको बोलते हैं कि आपने 6 घंटे में खाना है, और वो खाना शुरू करता है एक साइड से, पता नहीं वो शायद 2 घंटे में खा देगा या शायद वो 8 घंटा लग जाएगा उसको। बट हम्म। आपको वो प्लान करना है कि ओके, हम इंसान हैं, हमें प्लान करना है। वी हैव टू प्लान कि ओके, इफ आई हैव टू डू इट इन 6 आवर्स, और लेट्स से इफ आई हैव टू डू इट इन 1 ईयर, आई हैव टू कीप 1 month of cushion. I have to finish in 11 months. To finish it in 11 months, first day I have to do this much. Oh, let's say I have to do in 1 month, I have to do this much. To do 1 month this much, मेरे को एक दिन में कितना करना पड़ेगा, and then you हम्म। set your small targets, and then you try and achieve that. किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए द प्लान, ओरिएंटेशन, द एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि ओके, ये करने के लिए मुझे और क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड। आप समझ रहे हैं, मतलब हम्म। इट्स ओनली इन द माइंड। आपको किसी भी चीज के लिए सक्सेस होने के लिए आपको मतलब और क्या, एंड देन डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। दो चीजें, एक एक आपको तैयारी का प्लान, और आपको एक तैयारी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में आप यू हैव टू स्पेंड लेट्स से अबाउट 20 to 30% ऑफ द टाइम इन प्लानिंग, बिकॉज हम्म। आप प्लानिंग गलत कर देंगे। आपने अगर अपने पैसे गधे पे लगा दिया, तो वो गधा कभी रेस नहीं जीतेगा। हम्म। आपको व्हेन आई से पैसे, आई मीन योर टाइम एंड एफर्ट। हम्म। जब प्लानिंग इसलिए कि आप सही घोड़ा चुनने में अपना समय लगाए, तो इसीलिए आपको सही चुनने के लिए आपको यू हैव टू स्पेंड टाइम टू आइडेंटिफाई कि ओके, दिस इज द एग्जाम दैट आई नीड टू क्रैक, दिस इज व्हाट आई नीड टू अचीव, व्हाट डज इट एंटेल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। मेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मैं हासिल कैसे करूंगा। 1 2 3 4 5 6, किस में कितना टाइम देना है। लॉट ऑफ टाइम पीपल अचीव व्हाट दे डू, वो मुझे दो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं उसी के ऊपर जान लगा दूं, वो बाकी वाले छूट जाते हैं। हम्म। So, आपको जिसमें आपको जान लगाने का मन नहीं कर रहा है, दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट। आप यू विल गेट, लेट्स से इफ यू हैव टू गेट 200 एज पासिंग मार्क, यू विल एंड अप गेटिंग 300 इन द रेस्ट, एंड देन ये दो में आपको 50 60 आ जाएगा। हम्म। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की, तो इट केम आउट फ्रॉम द एसएसबी थिंग। यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, यू नीड टू प्लान एंड स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग इन लाइफ। Understood. Sir, there is one more concept called officer-like qualities, which you hear in SSB. And since you're an officer and you have gone through the whole process, what do you understand by officer-like qualities, and were you aware about it when you actually went for SSB? Yeah, I wasn't seriously. I'm sure Kaushik sir must have told me, सिखाया होगा उस समय, but as of now, I don't remember उस समय anything in my mind like officer like qualities. But but it is something that an officer should have. Officers, when you look at officers, जैसे कि आर्मी में officers बोलते हैं, officers are generally leaders. You have to lead your men. Hmm. Officers in one manner are no less than the celebrities that you have. ये सेलिब्रिटीज कुछ भी करते हैं, सेलिब्रिटीज किसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं, उसके ऊपर हल्ला हो जाता है, हंगामा हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन द पब्लिक आई। Hmm. यू कैनॉट जस्ट डू से एनीथिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू।
सो इवन ऑफिसर्स आपकी हर चीज, मतलब लोग कहते हैं कि अगर ऑफिसर के सॉक्स में छेद है, वो भी पूरे बटालियन को पता चल जाएगा कि आपके सॉक्स में छेद है। आप सोचते हैं, ये तो मैं बड़े बेसिक उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कैसे बिहेव करते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं ये जो एनडीए में बहुत ज्यादा ये ग्रेन किया जाता है। यू विल नॉट हम्म लाई, चीट और स्टील। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, और आप किसी को धोखा नहीं देंगे। हम्म ये आप क्या ऐसे ऑफिसर, आप चोरी करना, मेरे पास पेन नहीं है फट से मैंने किसी के लिए, पेन नहीं है, आप खड़े होकर के, मॉडल करेज होता है, पेन नहीं है, आप खड़े होकर के बताएं सर, मैं पनिशमेंट का हकदार हूँ, मुझे पनिशमेंट दीजिए, मैं पेन लाना भूल गया, या मैंने सर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, या जो आपने टास्क दिया था वो कंप्लीट नहीं किया, सर ये गलती हो गई। तो दीज आर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जो आप किसी भी चीज में आप सोचिए कि आप सही और गलत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाला जो वो है, कि आपको हम्म पता है कि सही और गलत क्या है, जो सही है दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी, दैट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, टू बी ए गुड वो। एंड व्हेन सो मेनी पीपल आर ऑलवेज वाचिंग यू, हम्म लेडी आती है तो उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है, अननेसेसरी, यू डोंट हैव टू गेट इनटू फाइट्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑल दिस थिंग्स जो आपको छोटी छोटी चीजें जो फैमिली में बचपन से सिखाया जाता है, दिस आई बिलीव इज ऑल्सो लाइक क्वालिटी, वे यू आर जस्ट यू बीइंग अ गुड मैन, ए गुड जेंटलमैन, yeah, that's what I feel is also like qualities. Understood, sir. If you could speak about your experience in the NDA, and if you have any memorable incident which you would like to share, what would that be? NDA was difficult, and NDA was very difficult. I was a completely civilian, and yeah, मैं ये कहीं और भी बताया है, because I was otherwise not very much of a sportsman, but then yeah, I was physically good, especially with my hands and all. I was always short, so people told me that you must do pull-ups and Hmm. you will become tall, and so I you would work out. And when I reached India, it just helped me a lot. उसके लिए एनडीए देर आर, सो आई वाज वेरी गुड फिजिकली, मतलब उस हिसाब से कि आप चाहे आप बॉक्सिंग करा लीजिए, आप रोप्स करवा लीजिए, आप चिनअप्स करवा लीजिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई वाजंट टू ग्रेट अ रनर। फिर वो प्रोबेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसका, बिकॉज आर्मी में और ये सब में ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिट, फिट वो है जो ज्यादा दौड़ता है, Hmm. एंड हम कहते थे यार हम दौड़ते नहीं है, दैट इज व्हाई वी विल नेवर रन अवे, वी विल स्टे बैक एंड फाइट। Hmm. सो दैट्स ऑन द लाइटर साइड। So NDA was NDA. There are two parts. There's a official part and there is an unofficial part. The official part is the structured training जो आपको कराते हैं, जो आपके Hmm. इंस्ट्रक्टर जाते हैं, आपके क्लासेस होते हैं. There is a drill, there is PT, there are classes that help you achieve Bachelor of Arts or Bachelor of Science depending on आप क्या करना चाहते हैं. So दैट इज द स्ट्रक्चर्ड पार्ट, जिसमें आपके इंस्ट्रक्टर जाकर के क्लासेस लेते हैं, आपका आप सुबह जाते हैं, पीटी करते हैं, देयर इज अ रूटीन. Hmm. इसके अलावा देयर इज अ पाताल लोक टाइप ना, वो अलग जो दिखता नहीं है, दैट इज द अनऑफिशियल पार्ट ऑफ एनडीए. आई डोंट नो आजकल कितना ज्यादा है, कम है, अच्छा है, खराब है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, बट दैट वाज बैड. और आई वेंट टू माइक स्क्वाड्रन, Hmm. उसकी भी अलग कहानी है. बट आई वेंट टू माइक स्क्वाड्रन. माइक स्क्वाड्रन वाज नोन एट दैट टाइम टू बी वन ऑफ द वर्स्ट. Hmm. आजकल शायद वो, फॉर द अनऑफिशियल पार्ट ऑफ इट, द Hmm. सीनियर्स वे नोन टू बी रूथलेस, एंड यू नेवर गॉट स्लीप. आई रिमेम्बर 2.5 hours ऑफ स्लीप पूरे दिन में मिलता था. मतलब रात को आई नो नो नॉट 2.5 hours, rather maybe 3.5 4 hours. Yeah, but that's how it is. 10 o'clock were lights out, and then 10 o'clock रात को माइक्स कॉन शुरू होता था, कॉलिंग्स होते थे, फिर वो दिन भर रगड़ा पट्टी होता था. And yeah, it was like that. So I did pretty okay Hmm. एनडीए के अंदर. And yeah, So then, how was your experience in the IMA when you transitioned to IMA? Any experience that you have from that time? IMA was again, IMA, we made a lot of friends with the direct entries. Okay. And the direct entries, yeah, that was the most outstanding. The direct entries तो आर्मी कैडेट एसीसी के एंट्रीज आते हैं, जो 2-3 साल सर्विस करके Hmm. देन दे ऑफ फॉर एसएसबी एंड देन दे क्लियर टू. एंड दैट इज व्हाट आई लाइक मोस्ट, मतलब उनके साथ, एंड नोइंग देयर एक्सपीरियंसेस, मेकिंग फ्रेंड्स विद देम वाज अमेजिंग.
एंड IMA में अगेन ट्रेनिंग एंड XNDA को IMA का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खटकता नहीं है. इट इज जस्ट दैट अनऑफिशियल पार्ट ऑफ इट, एंड दैट कीप्स वेरिंग कि कोई आपका सीनियर ज्यादा आपको पसंद करता है तो आपको ज्यादा बुला करके रगड़ा देता है. कोई आपका सीनियर इतना वो नहीं है तो आपका अच्छा अच्छा निकल जाता है. IMA में आई केम टू कैरन कंपनी विच वाज नोन टू बी द मोस्ट ठंड कंपनी. So Okay. we are a very third kind of a thing. The most outstanding, if I recall, were the camps that I liked the most. In fact, वहाँ पे एक भद्राज करके कैंप है, and that has got about 18 false heights. So that happens in the second term, and आप मतलब as a section, as a platoon, आपको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं, and there are navigation points. आप नेविगेट करते हुए आप अलग अलग पॉइंट्स में जाते हैं. देन यू हैव टू क्लाइंब अप द भद्राज का जो वहाँ पे है, दिस प्रीटी मच, एंड देन विद द लोड्स एंड ऑल. उसमें आपके जो कोर्समेट्स है उनका एग्जैक्टली पता आपको उसमें चलता है कि कौन कितना फिट है एंड मेंटली कितना स्ट्रांग. देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ का ऐसा होता है कि सबको मैं एक एक राइफल दे दूं और सबके वेट्स अगर इक्वल हैं तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो अपना लोड कैरी करना है ना. तो यू डोंट इवन नो कि कौन अच्छा है कौन खराब है. बट द मोमेंट पूरे सेक्शन के अंदर, लेट्स से द सेक्शन इज 10 men, तो सेक्शन के अंदर आई गिव यू वन लाइट मशीन गन. A normal weapon is about 4 kgs, a light machine gun would be about 7 to 8 kgs. And if I give you another, oh sorry, a little more, maybe 10, 11 kgs, and then I give you a rocket launcher, which is about 16 kgs, और छोड़ दें इनको, तो उस सेक्शन का या उस टीम का आपको एक्चुअल उसके इंडिविजुअलिटी निकलती है बंदों का. क्योंकि जो थकते हर कोई है, या सो एवरीबॉडी वांट्स कि मैं अपना कम से कम अपना सिर्फ राइफल और रुकसैक लेकर के पूरा का पूरा क्रॉस कर लूं. Nobody wants to pick up those extra heavy loads. If you give them a stretcher or something, nobody wants to pick up that extra load. आप समझ रहे हैं? क्योंकि everybody is thinking personal कि मैं कहीं साला एग्जॉस्ट होके गिर ना जाऊं. तो उसमें the material, the individual leadership या जो एक्स्ट्रा करने का जो वो है वो वहां पे निकलता है. ये मैं आपको मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर जब वो जाएंगे तो उनको समझाने के लिए बता दो, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है. उसमें सबको पता चलता है कि भैया जब सबकी लगी पड़ी थी, जब सबकी फटी हुई थी, तो हु वर द गाइस हु एक्चुअली गोइंग एंड कैरिंग द हेवियर स्टफ, हु वर एक्चुअली. तो ये जो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक तो फिजिकली अच्छा है तभी वो कर पा रहे हैं, दूसरा उनका मेंटल स्ट्रांग है. Mentally they Understood. are much stronger. That is why, and they're the guys, most of them, they are the ones who go and opt for special forces or Understood. things like that, जो ज्यादा challenging काम करते हैं. Yeah. Yeah. So I remember Bhadraj, my course was punished, so I had to do Bhadraj twice, 3 बार Okay. हमें, या हमें करना पड़ा था. There was some camps के साथ, there was some punishment and all, and I was one of those जो उसमें फंस गया था. We had good fun time, and then we started enjoying, and that is where I think मेरा in some manner I realized कि I should be able to join the special forces, Got it. because I was doing pretty well in those camps. Yeah. So if you could speak about your motivation to join the Para SF, so did you opt for 21 Para SF directly, or you went into another regiment and then you opted? Yeah, no, I got commissioned to 3 JAT, but I was a special forces optic. No, yeah, again, I have mentioned this otherwise also. I was before joining NDA, I was pretty. We did have a lot of fights वगैरह, ऐसा नहीं था. Childhood में me and my brother school में जहाँ भी जाते थे, we were getting into good kind of fights, and ना इधर उधर लड़ते रहते थे. We'll come to Delhi. Delhi में भी कभी बस में लड़ाई हो रही है, कभी कहीं लड़ाई हो रही है. तो all that was a part of it. But when it came to actually एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिलिटेंट्स या कोई आपके ऊपर गोलियां चलाएंगे या दुश्मन आपको ढूंढ ढूंढ के गोलियां चलाएगा, तो वो एक हल्का सा डर था मेरे दिल में. When I was going to NDA as an army cadet, that fear was there. And yeah, so that I would say, so initially I thought कि I don't know how am I going to behave जब लोग actually आप समझ रहे हैं कि you know you going on a convoy and somebody is going to come and attack and ambush you, and कैसे होगा वो ढूंढ ढूंढ के आपको, मतलब he is taking aim and trying to shoot at you and planning आपको कैसे करेगा. मतलब is that the kind of life I was pretty
scared उस समय. So initially when I had gone for SSB, I was a naval cadet. I had opted Hmm. for Navy यही सोच करके कि I'll be a will Navy doesn't get into operations like this and ship में घूमेंगे which is going to be safe. But when I started reading, I realized I read a book on the genocides. Okay. So genocides में again Kashmir वाला issue, that is Baramulla. आज के डेट पे why the reason why Kashmir is with us, Hmm. or the Pakistanis failed to come and capture Kashmir, was because they spent one complete day raping every woman that they could find in Baramulla and killing every man that they could lay their Hmm. hands on. Hmm. Okay, this happened. I'm forgetting the exact dates. They had reached close. Baramulla is about 40-45 kilometers from Srinagar. Hmm. बारामूला में पहुंच गए थे एंड देन पूरा दिन वहां पे उन्होंने बर्बाद किया. इसी दौरान इसी दिन के अंदर राजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन Yeah. एंड द इंडियन आर्मी वाज लैंडेड इन श्रीनगर. एंड बिकॉज दैट थिंग हैपेंड, कश्मीर इज विद अस. There were 10, 11 nuns in Baramulla. They were all Anglo-Indians and British both. So they bore the brunt of the entire. Hmm. This thing actually touched me. I realized कि भैया अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है ना, that was when the JNK army was not strong. अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी सेफ नहीं है, आपके फैमिली वाले कभी सेफ नहीं. Hmm. और आर्मी स्ट्रांग कब होगी आपकी, आपके डिफेंस फोर्सेस कब स्ट्रांग होंगे, आपके डिफेंस फोर्सेस तब स्ट्रांग होंगे जब जब अच्छे लोग या जब हर कोई विलिंग होगा, मोटिवेटेड होगा कि मैंने जाकर के लड़ना है. Hmm. भगत सिंह तो हर कोई चाहता है कि पड़ोसी के घर पे पैदा हो, Hmm. है कि नहीं. एवरीबडी वांट्स भगत सिंह शुड बी बॉर्न देयर. बट अपने में कितना दम है. तो आई समहाउ आई जस्ट गॉट ओवर इट. मैं कहा नथिंग डूइंग यार, आई विल जॉइन, आई विल गो एंड फाइट, आई विल नॉट स्टे बिहाइंड. When there's a cricket match, there are 11 players playing. I'm not going to be the 12th man जो जाकर के सिर्फ बॉटल देगा किसी को या पानी पिलाएगा या चाय पिलाएगा. नहीं, I will be in there no matter what it takes. The Hmm. Bangladesh issue, I read on the Bangladesh issue on the same book 1971 wala, where the Pakistani army, they raped every woman that they could find from Dhaka. They killed everyone. मतलब पूरा millions they have. The same thing you look at what is happening in Gaza. Hmm. Yeah. So you need to have a strong thing. This is what I realized, and this was in me. And that's the time जो एनडीए में हमारे जो स्क्वाड्रन कमांडर थे, Hmm. कर्नल हेमोंग तो पेंगिंग केम एज द स्क्वाड्रन Okay. कमांडर. Uh, His personal charisma and the way he conducted himself, उनके स्टोरी सुन के लगता था कि yes, that is what I would want to be. hmm. अगर करना है तो I should join the special forces. And actually people, everybody is so motivated. I wanted to. So I was a special forces opti throughout एनडीए में Hmm. जाने के बाद से. But in the sixth term, rather fifth term, end of term, we were all preparing for higher physical PT test, and I Okay. could do all the tests. I was good in PT and all that. So एक test होता है उसमें वो handspring करना होता है. We have to Hmm. do a handspring and then have a somersault. And उसमें मैट के नीचे कुछ था and करते करते I was giving a demonstration to the entire class. पूरे क्लास को खड़ा करके PT इंस्ट्रक्टर बोला ओके कश्यप दिखाओ. And I was giving a demonstration कि कैसे करना है. There were higher PT tests when you're going for good merit card, blue, half blue इसके लिए. Hmm. So when I was doing that, वो मैट के नीचे कुछ था and my knee just snapped उसके अंदर and I couldn't get up. तो सबने वो मेरे को साइड पे खड़ा कर दिया. Hmm. Yeah, and I had to report sick and there was a meniscus tear in my knee. Hmm. And I was like खत्म अब तो मतलब कैसे होगा. But of course because I was going for the higher merit higher test and all, I somehow I had passed all the PT tests. So fifth Hmm. term, end of term, जब fifth term खत्म होता है and before you going for sixth term, I was to be an appointment. So I was Hmm. told to join early. जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको एक हफ्ता पहले बुला करके वो स्वॉट ड्रिल वगैरह कुछ कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए सिखाया जाता है. But then उसी समय because I had this knee thing and I was so motivated to join the special forces. I consulted, my uncle was in AIMS, Dr. R.K. Sharma, he was the medical superintendent. तो उनके पास मैं गया, he got his check, बोला कि वैसे तो you may be able to manage, but I said no, I want to join the special forces. Special forces are like the
they're going to go through the roughest of the world. They're going to do para jumps, so skydiving और सब कुछ, मतलब जंगल में दिन भर रात में चलना जंगल में, it's Hmm. difficult. Yeah, that, yeah. तो मैंने उनको बताया, नहीं नहीं यार, ऑब्स्टिकल कोर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से जंप मारना होता है, सब करना पड़ेगा। बोला फिर तो भैया आप नहीं कर पाओगे, यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड। मैंने कहा Hmm. प्लीज ऑपरेट इट। So same day I got it operated. I got an arthroscopy. I got the meniscus removed, and that's how I joined back late for my NDA sixth term. Hmm. And I would seriously like to thank my NDA, मतलब जो मेरे instructors थे उस समय. Probably I had a good reputation, so they kind of liked me. They did not want me to get relegated, and they helped me. Hmm. मतलब NDA में ऐसा होता है कि आप अगर ज्यादा मेडिकल कैटेगरी हैं ज्यादा टाइम के लिए, देयर इज अ स्पेसिफाइड डेज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। अभी लेट्स से इट इज 30 डेज। तो आप अगर 31 डेज आप अगर मेडिकल कैटेगरी में हैं, यू हैव मिस्ड ट्रेनिंग, तो you will be relegated, you'll go to the next course, And which is very sad. You would always, everybody strives to pass out with his own course. hmm. So when I went back to NDA, they helped me, the squadron staff, they helped me कि अगर कल कुछ competition है तो they just give me 1 day's attendancy or 1 day's category, so that मेरा category ना बढ़े। And I passed out in time, Hmm. बिल्कुल, and I was doing pretty well, but I was not confident। फिर आई में भी जब मैं गया, I was not that confident कि I will be able to undertake मतलब special forces का probation with my knee surgery। Hmm. So because I was pretty broken, तो मैं सोचा अब अगर चलो special forces नहीं है तो let's go for the next वो, I was very fascinated with the Gurkhas, so I opted for Gurkhas। Hmm. One of my DS had even written to his colonel of the regiment कि इसको लेना है करके, तो I had opted for 3 GR। And you don't always get जो आपको Hmm. आप मांगते हैं, so I got 3 JAT। Hmm. Again 3 JAT was, अगर आपको मैं बोलूँ, 3 JAT, it's one of the finest battalions, infantry battalions, and 3 JAT के जो records हैं वो कहीं भी नहीं है। 3 JAT 1965 वॉर में इट हैज गॉन क्लोज टू लाहौर, मतलब Hmm. बाटापुर शू फैक्ट्री है लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, वहां तक पहुंच गई है। इट इज द यूनिट दैट हैज गॉट द रिकॉर्ड फॉर डीपेस्ट पेनिट्रेशन इनटू पाकिस्तान। Hmm. इछोगल कनाल है, इछोगल कनाल, इस कनाल के डिफेंसेस होते हैं। इछोगल कनाल इज मेड टू डिफेंड पाकिस्तान को ना, प्रोटेक्ट करने के लिए Okay. ऑब्स्टिकल्स बनाया जाता है। तो इछोगल कनाल इज बीन मेड लाइक ए इम्प्रेग्नेबल थिंग, जिसको क्रॉस नहीं कर सकते। एंड 3 JAT के जाट हमारे 2 बार इछोगल कनाल को क्रॉस कर दिया इन्होंने, विदाउट आर्टिलरी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग। एंड Hmm. जाकर के वो बाटापुर शू फैक्ट्री में बैठ गए थे, which is again, as I mentioned, has got a record of deepest penetration। So that was a fine Pulton that I was honored to have. God has been very kind, in fact, मेरे साथ। तो I went there। वहां जाकर के I was really enjoying। I was when I joined the unit, it was in around the line of control in Uri। Hmm. 3 महीने मेरे ज्वाइन करने से पहले देयर वाज अ केस जिसमें आकर के पाकिस्तानियों ने एक संतरी का दिन में 12 बजे आके Okay. गला काट करके लेके चले। तो Hmm. इट वाज दैट काइंड ऑफ एक्टिव। और उस समय सीज फायर भी नहीं होता था, दवा के आर्टिलरी शेलिंग होती थी। एंड आर्टिलरी शेलिंग को आपको मतलब यू हैव टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट टू नो व्हाट इट इज। Hmm. जमीन कांपता है, इट्स लाइक बम बम करके ना, यू कैन हियर इट, वो बिल्कुल डॉल्बी स्टीरियो की तरह। एंड दैट्स टेरिफिक। सो दैट इज वेयर आई वाज। एंड कुछ दिन के बाद वहां से ना वी हैड टू गो टू कोर बैटल स्कूल। Hmm. कोर बैटल स्कूल, 15 कोर बैटल स्कूल, 16, सबके अलग अलग हैं कि एनी न्यू इंडक्टिस कोई भी नए Hmm. इंसर्जेंसी वाले एरिया में आते हैं, टेररिज्म वाले एरिया में आते हैं, तो उनको वहां पे ट्रेनिंग दिलाया जाता है। सो आई वेंट देयर, एंड वहां पे आई रियलाइज वन ऑफ माय पोस्टमेट्स वाज डूइंग अ प्रोबेशन, कर्नल नितिन गुप्ता, Hmm. वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वहां पे प्रोबेशन करा था, उसके साथ बात की कि अच्छा प्रोबेशन में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, एंड ऑल दैट। एंड कर्नल जॉन डी बिट्टो वाज द कमांडर। Hmm. व्हाट अ लेजेंडरी गाय अगेन ही इज। उनके साथ बात करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि भैया कुछ भी है, जिंदगी एक ही है। नहीं, इधर Hmm. आप उसको कि मैं कभी एसएफ ऑप्टी होता था करके निकाल लीजिए, कि यार मैं भी कभी एसएफ ऑप्टी होता था, या आप खुद ऑप्ट करके ट्राई कर लीजिए। सो इनिशियली क्वाइट ए फ्यू ऑफ अस वेर वॉलंटियर्स, कि हमने सबने सोचा कि चलो हम करते हैं। बट देन हम में से कुछ बैकआउट हो गए। उन्होंने सोचा कि यार आर्मी में ना बहुत सिखाया जाता है कि यू हैव टू टेक परमिशन, आपका बॉस, आपका कमांडिंग ऑफिसर इज योर बॉस, सो ही हैज टू साइन द सर्टिफिकेट, तो विदाउट हिज सर्टिफिकेट्स गेटिंग साइन यू कैन नॉट ऑप्ट।
सो लॉट ऑफ अस दे बैकड आउट। इनिशियली मैं भी सोच रहा था कि हाँ, इट इज़ नॉट करेक्ट। सही तो ये है कि आप अपनी यूनिट में वापस जाइए, वहाँ जा करके वॉलंटियर फॉर्म दीजिए एंड आपका सीओ साइन करेगा। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही वाज मच फिटर देन आई वाज, बहुत ज़्यादा फिट। एंड इफ आई लुक एट इट, मतलब ही वाज दैट रनिंग रनिंग में बहुत हमेशा पूरा क्रॉस कंट्री वगैरह लीड करता था। उसने भी डिसाइड किया कि भैया मैं यूनिट जाऊंगा और सीओ को कन्विंस करूंगा। तो जैसे यूनिट गया, सीओ ने बोला अच्छा पहले ये करो फिर वो करो, और फिर वो बेचारा, एंड ही वाज डूइंग सो वेल, ही कुड नॉट ऑप्ट। हम्म फॉर मी, आई टुक ए कॉल। मैंने कभी कभी वो जाग जाता है तो मैंने डिसाइड किया कि भैया नहीं, माई लाइफ डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक। हम्म My CEO was very nice, is very a thorough gentleman. I'm sure had I opted him, had I approached him, he would have not said no. बट मैंने सोचा कि इतना बड़ा चांस नहीं, मौका कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिटी कभी हम्म आता है। यहाँ पे देयर इज अ जेंटलमैन लाइक कर्नल ब्रिटो हु इज रेडी टू साइन, हु इज ट्राइंग टू गेट यू, हेल्प यू। एंड देन आप अनसर्टेनिटी के लिए किसी और के हाथ में अपने जिंदगी के वो डाल दें जिसके लिए यू आर हम्म सो पैशनेट अबाउट। यू हैव ग्रोन अप एनएसजी में थिंकिंग ऑफ, ओ सॉरी, एनडीए में थिंकिंग ऑफ joining the special forces, and now you have an opportunity so close and you want to give it in somebody else's hand. मैं कहा नहीं, I will not let that happen, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। And I opted. Got it. So those times, I'm talking about 2002, 3. So 21 para was still a struggling unit. We had not, we just converted from an infantry battalion and become the special forces. So we were not the best at that time. We became the best, of course, later. So, उस समय हम सिर्फ 9 पैरा एसएफ का, 9 और 10 पैरा एसएफ को जानते थे। हम्म डेजर्ट्स में मुझे लगा बहुत ही यार, मतलब डेजर्ट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो एंड आई ऑलवेज हैड, बिकॉज अरुणाचल में वी हैड ग्रोन, तो वो था कि जंगल्स, आई लव्ड जंगल्स। सो आई ऑप्टेड फॉर 9 पर ऐसा, because if you have to go for the special forces, you might as well go for the best. हम्म But उस समय because I belong to the northeast, तो Kalbitto said कि no, you're from the northeast, you go to this, it's going to help you. हम्म And he sent me and it did really help me. मतलब I'm really grateful for that work of his. So that's how I opted for 21 pair SF. 21 pair SF was supposed to be for urban warfare then. Then we हम्म got converted to jungle warfare specialist and things like that. So that was my journey of opting for the special forces. Understood, sir. So, sir, if you could also speak about, why there's so much craze about special forces, and why do we call it special? What is so special about them? Yeah, special forces, there are four things. मतलब अगर आप पूरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मैन पावर। इट्स एक तो इतना हवा है, इतना डर बैठा रखा है कि प्रोबेशन होता है, ये बनाते हैं, भूत बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो ओनली द बेस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली जनरली मोटिवेटेड दे गो, एंड उसमें सिलेक्शन होता है, स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, अच्छा खासा प्रोबेशन होता है। ओनली दोस, सेकेंडली जो अच्छे मैन पावर है उनको आप अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज योर चार्टर इज गोइंग टू बी ह्यूज। मतलब आपको ऐसे टास्क में लगाया जाएगा जिसको बाकी बाहर वालों को सोचने के लिए डर लगेगा। नंबर थ्री इज यू आर इक्विप्ड वेल। आप बाकी आर्मी पे के पास कुछ भी आने हम्म से पहले, आप आपका क्योंकि रोल अलग है, आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने वाले हैं दुश्मन के एरिया में, और आप दुश्मन से सब तरफ से घिरे हुए हैं, उसके बाद आपने ऑपरेट करना है। तो आपके पास जो इक्विपमेंट है, मतलब बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विल कम टू यू। हम्म या एंड फाइनली आपको टास्क ऐसे मिलेंगे जो जिसके लिए रिक्वायरमेंट, लाइक द सर्जिकल स्ट्राइक्स। मतलब हम्म यू कांट सेंड एंटायर आर्मी टू डू अ सर्जिकल स्ट्राइक, थिंग्स लाइक दैट। आपको अगर छोटे से लोग से आपको ज्यादा वो करना है तो वो है। स्पेशल फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा से रहा है। मतलब मेरे लिए अगर कोई एक्चुअल स्पेशल फोर्सेस, मतलब एक्चुअल तो क्या, हम सारे हैं, बट इफ यू नीड टू वर्शिप और प्रे और idolize somebody, it is हमारे शिवाजी महाराज। the kind of operations that he has done, मतलब he is really, उस समय पे उन्होंने जिस हिसाब से एक फ्रूट के बास्केट में घुस करके हम्म बच करके निकल के आना, आप समझ रहे हो उनका माइंडसेट हम्म कैसे सोच। अफजल खान को जो मारा उन्होंने वागना पहन करके, हम्म ऐसे थोड़ी कि एक दिन चले गए और जाकर के मार दिया। ही प्लान इट। एंड नॉट जस्ट दैट, देखिए,
अलग अलग तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड कभी आप किसी और से, बट जैसे हमारी आर्मी है लीडर्स के लिए, हम्म फॉर लीडर्स टू डू थिंग्स योरसेल्फ, खुद से करना, खुद में वो हिम्मत होना, और खुद में वो काबिलियत होना, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना कि मैं ये कर पाऊंगा। अफजल खान उसके डबल साइज के आदमी को जा करके एक वॉकनॉक पहन करके जाना और पूरा बैकअप वो करना कि इसको मैं मारूंगा तो कौन मुझे कैसे प्रोटेक्शन देगा, कौन कैसे सपोर्ट करेगा, मैं कैसे निकलूंगा। हम्म इट्स नॉट इजी। ही रेडेड सेस्ता खान का जो पैलेस हम्म एज अ बाराती, बाराती मैरिज पार्टी बन करके गए, एंड ही रेडेड द पैलेस, ही ऑलमोस्ट किल्ड हिम। सो मेरी तरफ से शिवाजी महाराज इज somebody who is actually, and it's वो that coincidence that हमारी यूनिट का वो is वाघ शिवाजी महाराज, because we are raised from the Marathas. हम्म That's besides the point. That man was something, मतलब he idolizes everything that you can speak of for special forces. अंडरस्टैंड Now the concept was has always been there. आप मतलब ट्रोजन वॉर जिसमें वो घोड़ा ले जा करके ट्रॉय में वो ट्रोजन हॉर्स डालते हैं जिससे ये ट्रोजन, उसकी हम बात सुनते हैं। वो घोड़े के अंदर एचिलिस, जो दैट इट्स देयर इन दैट मूवी ट्रॉय, हम्म ब्रैड पिट, एकिलिस। हम्म So that was the concept of special forces. Who was he? He was a special forces. Even if you talk about Genghis Khan से लेकर के उनके वैनगार्ड जो सबसे आगे चलने वाले, they were the superior and the most trained guys. So the concept had come up as when it was by the Germans. हम्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जर्मन्स और जो अलाइड फोर्सेस थे वो बिल्कुल स्टेलमेट हो गया था, ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गया था, और कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कोई पीछे नहीं जा पा रहा था। ट्रेंच में इधर ट्रेंच से वो फायर कर रहे हैं, उधर ट्रेंच से वो फायर कर रहे हैं, भूत बना हुआ था। लाइफ हैड बिकम कंप्लीटली डिसगस्टिंग, ट्रेंच फुट से लेकर के वो सबके जूते सर गए, सबके वो सर गए, बारिश हो रही है वहां पे, यूरोप का वो माहौल। तो उस समय जर्मन जो ब्राइट ऑफिसर्स थे, दे कुड नॉट स्टे बैक। हम्म उन्होंने यार ऐसे तो नहीं चलेगा। सो दे डेवलप दिस कॉन्सेप्ट कि ओके हम स्टेलमेट है, कहीं और से जहां छोटा सा गैप मिल रहा वहां से हम पीछे जाएंगे और जाकर के पीछे से अटैक करेंगे। हम्म तो आप तो दुश्मन को सामने देख रहे हो, पीछे से आकर के अटैक करने लगे। तो हम्म दिस वाज द इनिशियल, एंड इनिशियल वाज डन इन सम टाइम अराउंड 1917 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो इट वाज अगेंस्ट रशियंस। द रशियंस एक रिवर ड्वाइन करके है वहां पे, दे वर होल्डिंग ए ब्रिजहेड, और वो ब्रिजहेड सामने से दे लॉन्च 3-4 अटैक्स, दे कुड नॉट ब्रेक थ्रू, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। सो कहीं और से इन्होंने रिवर क्रॉस करा दिया, दे केप्ट देम ऑक्यूपाइड, और पीछे से जाके अटैक किया, एंड द एंटायर रशियन जो इतने बार डिफीट करते, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, एंड दे एवरीबॉडी रैन हेल्टर स्केल्टर। हम्म सो दैट वाज द जेनेसिस। इसके बाद जो सेकंड थर्ड ऑपरेशन हुए थे उसमें जनरल रोमन को हम जानते हैं। जनरल हम्म रोमन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वाज अ कैप्टन और अ लेफ्टिनेंट उस समय, एंड ही वाज वन ऑफ द गाइज हु स्टार्टेड दिस। एंड इसके साथ शुरू हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉर्म ट्रूपर्स। ओके तो इनको स्टॉर्म ट्रूपर्स बोलते थे, जो सिलेक्टेड एंड द बेस्ट ऑफ द गाइस दे स्टार्टेड सिलेक्टिंग, जिनको वो दुश्मन के एरिया में अंदर पीछे से भेज देते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको लैंग्वेज भी आता था, और हम्म जाकर के वो पीछे से अटैक करते थे, और सामने वाले उनको बिजी रखते थे। एंड हम्म देन दिस वाज द आइडिया ऑफ स्पेशल फोर्सेस। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंटरेस्टिंगली जब हिटलर लॉन्च हिज ऑपरेशन इनटू पोलैंड फर्स्ट, हम्म तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ पोलैंड में, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ऑपरेशन स्टार्टेड ऑन 1 नहीं सॉरी, वाज टू स्टार्ट ऑन 1 सितंबर इनिशियली। तो इन्होंने एक उनके सबसे ब्राइट ऑफिसर के साथ में अबाउट 24-25 पीपल, दे हैड प्लान टू सेंड अक्रॉस इनसाइड पोलैंड। हम्म पोलैंड में एक मॉस्टी करके एक रेलवे स्टेशन था, और रेलवे स्टेशन के सामने एक टनल था। तो उस टनल के अंदर पॉलिश आर्मी ने पूरा एक्सप्लोजिव्स लगा करके रखे थे। सो इनको टास्क दिया था कि आप जाइए और आप जाकर के ये रेलवे स्टेशन को कब्जा कीजिए, एंड आप वो टनल को ओपन करवा दीजिए, हम्म सो दैट आप समझ रहे पूरी आर्मी का जब लोड्स आप पीछे से उसको गाड़ियों से कैसे फेरी करके, यू आर मेकिंग दैट मच वल्नरेबल, आपके पूरे ट्रेन से ट्रेन सीधा पोलैंड तक आपके सप्लाई लाइंस खुल जाएंगे। हम्म एंड दिस गाइस वेंट एंड दे डिड दैट ऑपरेशन। 2 बजे तक उनको क्रॉस करना था, वो दे कंप्लीट करना था, दे वेंट कंप्लीटेड। और रेलवे इंजन लेकर के वो वापस आए बताने के लिए, दे वर आउट ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से बोला कि अरे ऑपरेशन तो डिले हो गया।
Germany did not even launch that operation on that night when they had to, क्योंकि Mussolini ने back out कर दिया था and a lot of chaos and confusion was happening. So, but the special forces operation, this is one of the first operations that happened. मैं आपको मतलब concept समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि special forces actually क्या है. One of the most brilliant operations that I would say was जब द ब्रिटिश और सेकेंड वर्ल्ड में, तो ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स का पास तब तक स्पेशल एयर सर्विस जो उनका स्पेशल फोर्स है, जिससे हमने भी अपना वो किया है, मतलब वी हैव टेकन द आइडिया, वो तब तक रेज नहीं हुआ था. सो ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में बैटल ऑफ ब्रिटेन चल रहा था, जिसमें एयर अटैक्स होते थे. यहाँ से वहाँ एयर जाते थे. एंड द ब्रिटिशर्स, द जर्मन्स वर द फर्स्ट वंस, वो टेक्नोलॉजी के लिए दे वर वेरी साउंड. तो दे ब्रॉट अप द कांसेप्ट, दे मेड अ रडार. ओके. अब जब रडार आ गया, तो जब ब्रिटिश एयरक्राफ्ट वहां जाते थे तो उनको पहले ही पता चल जाता था, दे वर टेकिंग हेवी लॉसेस. उनको पता नहीं चला कि यार ये कैसे हो रहा है, बताओ कि साला हम जब भी जाते हैं उनको पहले से पता हो जाता है. सो फिर वो काफी करते 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 दे थॉट कि अच्छा, दे मस्ट हैव रडार. The British were also making a radar and it was in a very advanced stage, but they had not finalized it. मतलब complete नहीं हुआ था. So they launched a special forces operation. They sent the commandos, the specially elite with the elite technicians. They went and they raided. There was an island Brunoville करके, जहाँ पे they raided. They got the parts of the equipment कि उनके पास जो equipment है उसको लेकर के आओ. उससे पहले it was an intelligence war. They got that and then they came back and based on that they made a radar. And the radar was instrumental in Battle of Britain being won by the Britishers. आप समझ रहे मैं क्यों स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिससे पूरा वॉरफेयर, पूरा वॉरफेयर चेंज हो गया. अंडरस्टूड. If I start talking about, मतलब I can go on. Again, Germans, it's not that I'm a very fan of Germans, but जो ऑपरेशन, हम एक दूसरे के फैन हैं जिन्होंने अच्छे ऑपरेशंस किए. इबन अमल करके एक बेल्जियम के अंदर इम्प्रेग्नेबल फोर्ट होता था. when the Germans were assaulting, attacking, तो बेल्जियम के थ्रू they went into France. ठीक है. तो 1939 में इबन अमल करके there's a huge fortified, उसमें बहुत सारे होते. that was supposedly impregnable, आप वहां जा नहीं सकते. सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लाइडर्स लिए. ग्लाइडर्स, उस समय हेलीकॉप्टर्स नहीं होते थे. उस समय ग्लाइडर्स की एक प्लेन पीछे एक ग्लाइडर को टो करेगा, वो टो करके प्लेन डिटैच हो जाएगा, वो द ग्लाइडर विल गो एंड लैंड. स्पेशल फोर्सेस गाइस, these guys, they landed on the one and with about 85 odd people, they took over the entire. That's classic. There was a movie also in that. So special forces is like that. It is to do that kind of daring kind of a task. आप जिसमें 85 लोग लेकर के रात के टाइम पे आप जाकर के एक फोर्ट, वेल, वो जिसके अंदर मतलब आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई आपका नॉर्मल फोर्सेस, आप रेगुलर अटैक नहीं कर पा रहे, यू गोइंग इनसाइड दैट फोर्ट, लैंडिंग देयर and executing an operation. Understood. I can keep narrating you incidents like this. If you remember Mussolini, Hitler and Mussolini, the dictator from Italy, this guy, Italy was so they were good bum chumps. And after some time, what happened? Sometime around 42, 43, the Italians, they got into an agreement with the Allies party, and then Mussolini was put under house arrest in a hotel called, a resort called Grand Sasso. Again, Hitler was given the task. Hitler found his brightest of officers, Otto Skorzeny करके, बोला कि इसको ढूंढ करके आप निकालिए. Again, they used gliders, and just about 30 to 40 minutes they landed gliding. That place Grand Sasso was such a place जहाँ पे मतलब normal route से आप जाकर के attack करना, offensive operation करना was just not possible. It was in Italy के अंदर, completely surrounded, and these guys landed just by gliders, and 40-45 minutes के अंदर everybody just gave up, उठाया और चल दिए. Understood. Mussolini was rescued. All right, sir. So if you could speak about your experience in the probation of 21 para, and what are the skills that they're looking for when they actually select you? If you could speak about that. Yeah, if basic, मतलब आप बहुत ज़्यादा set off वो में आप नहीं जाएंगे, simple and straight.
if I have to plan that operation on, let's say any of this that I mentioned, इसमें you have to plan an operation कि आपको जा करके मसलिनी को लेकर के आना है, तो आपके कॉलेज में बैचमेट्स रहे होंगे, आपके स्कूल में कोचमेट्स रहे होंगे, क्लासमेट्स रहे होंगे, उनमें से आप किनको चुनेंगे? Who are the ones जिसके साथ you would like to fight? Who are the ones? आप समझ रहे हैं? So you have to be a team man. When I was talking to you about the camps and all, वो कैंप में there are people who are individualistic, जो अपना सामान सिर्फ लूंगा, मैं अपना हथियार लूंगा और मैं चुपचाप चलता रहूंगा. You are not helping the team. When you are part of the team as officers in the special forces, हम जब जाते हैं पूरा लोड शेयरिंग होता है. We go heavily equipped, मतलब बहुत टास्क के ऊपर वो करके अलग अलग वो होता है. एंड इनवेरिएबली आपको जवान आपको बांटता है कि साहब आपने ये 4 चीजें लेनी है स्क्वाड का, ये आपका है. यू कैन से क्या रे मैं ऑफिसर हूँ यार, मैं ये लेके नहीं जाऊंगा. सो आप ऐसे लोग ढूंढते हैं. कल जिसका दिमाग चलता हो, जो ऑपरेशन के अंदर ये नहीं कि बिल्कुल फॉक्स हो जाएगा, डर जाएगा, या जो इनिशिएटिव नहीं लेगा. देयर आर टाइम्स यू आर कॉट. मतलब आई एम फ्रंटली गोइंग फॉर अ कैंप एंड आई हैव सीन अ कैंप. दिस हैपेंड मेरे साथ. मेजर अमित देसवाल वाज देयर. Okay. we देसवाल वाज एब्सोल्युटली समवेयर एल्स. वी वर ऑपरेटिंग टुगेदर, वी वर गोइंग फॉर अ कैंप. हमें पता चला कैंप का. मैं ढूंढते 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 आई वेंट एंड सॉ द कैंप एंड आई देन आई रियलाइज कि मैं इफ आई स्ट्राइक दिस कैंप सीधा यहाँ से, ये तो सारे पीछे के पीछे भाग जाएंगे. आप तो एक गोली चलाओगे ना, एक गोली चलाते ही जो बंदे हैं ठक से दे विल ऑल जंप डाइव एंड दे विल स्कूट. सो यू नीड समबडी बिहाइंड. देसवाल वाज समवेयर एल्स. आई कॉल देसवाल. मैंने आकर के उसको दिखाया कि श्रीमान ये है, व्हाट डू यू डू? ओ दैट गाय वाज समवन समथिंग यार. एंड वो एरिया में आपको समझा नहीं सकता. पूरे शेयर क्लिफ, मतलब रस्से लगा करके पिच डार्क नाइट के अंदर यू हैड टू गो बिहाइंड. जा करके वहां वहां उनके संतरीज हैं, उनके कैंप्स है, उसके पीछे दे हैड टू गो बैक एंड स्टैंड. अब मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे इतने शेयर क्लिफ के ऊपर रोप्स लगा के विच एक टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स सीखना, किसी को एक्सपर्टीज होना, और ऐसे रात में हिम्मत होना. आप समझ रहे हैं? मतलब आप जब खड़े होकर के आपको डर लगता है कि नीचे शेयर क्लिफ के ऊपर आपको कैसे मतलब ग्रिप्स मिलेंगे, बारिश हो रही है, पानी उसके अंदर, मना कर दे रहा. अरे इससे पागल हो गया. मतलब इनफैक्ट आई वाज द वन हु वाज टेलिंग हिम कि तू यहाँ से नहीं जाएगा, ये दिस एक्सेस अप्रोच इज वेरी डिफिकल्ट, तुम इधर से कभी नहीं जाओगे. यू गो द लॉन्गर रूट, आप इधर से चल के जाओ, विच इन्वॉल्व अ ह्यूज डिस्टेंस एंड विद दैट लोड्स. और वो 6-7 दिन से चल के आ रहा था कहीं और से कहीं और से. मैंने उसको बुलाया, बट दैट गाय वेंट, ही वाज देयर बिफोर टाइम. इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कैसे आपको बनना चाहिए, यू डोंट वांट समबडी जिसको आपने ऐसा टास्क दिया जो साला लॉस्ट हो जाए ना जंगल के अंदर. वो जंगल में तो हम पहली बार गए हैं. मैं जाके लॉस्ट हो जाऊं तो अब मैं लॉस्ट कैसे नहीं होऊंगा? बिकॉज मुझे आता है ना, मैप पढ़ना आता है. व्हेन आई सी अ मैप आई नो प्रिसाइजली. आई एम प्रोफेशनल, आई एम सीरियस टू माय प्रोफेशन. अब मैं ऐसा बंदा नहीं लूंगा जो वहां जाने से उसकी फटेगी, बोले सर ये तो असली में मिलिटेंट है, इनके पास तो ये हथियार है, ये तो मारेंगे मारेंगे तो मैं क्या करूंगा? ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए ना. मुझे बंदा चाहिए जो बोलेगा अच्छा सर यहाँ से ओके आप कह रहे हो ठीक है, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, दिस इज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट, आई विल रश. यू कैन रीच दैट पॉइंट आप अनलेस यू आर फिट कैरिंग दैट 20-30 केजीज ऑफ लोड हथियार के साथ. एंड रास्ते में ऐसा भी तो ये नहीं है ना, उनके और भी तो पोस्ट हैं जहाँ पे you never know, you stumble upon somebody else and he fires on you and he engages you. So you have to do that and then reach that place in pitch dark night. समय के साथ कल अगर कैजुअलिटी होती है, अगर मुझे गोली लग जाती है, ठीक है, जो लगी भी है, तो वहां से भरोसा होना चाहिए ना कि ये बंदा कम से कम he will come and pick me up and get me back. लेकर के आएगा. वो खुद ही अगर दुबक करके बैठा हुआ है तो ऐसे बंदे भी आपको नहीं चाहिए. सो बेसिकली घूम फिर के अच्छा ऐसे भी बंदे नहीं चाहिए जो मैं बता रहा हूँ और मेरे साथ आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है. ये सर ऐसा नहीं होता, सर ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता. सो सब घुमा फिरा करके यू यू नीड अ टीम मैन. वी आर नॉट लुकिंग एट सुपर ह्यूमंस, सुपरमैन जो बहुत ज्यादा खुद मतलब लाइक रैम्बो नहीं, खुद जाकर के सब कुछ खुद ही कर लेगा, तो वो तो खुद ही कर लेगा. हम क्या करेंगे? ठीक है, वी आर लुकिंग एट टीम मैन जो एक दूसरे के साथ यू सी अ पर्पस इन लाइफ, यू सी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको कैसे करना है, कंस्ट्रक्टिवली कंपनी वो करे. कल अगर उसने एक जवान का काम करना है, पिट्ठू उठाना है, जवान को उठाना, हम भाई हैं यार, हम सोचते भी नहीं है.
ठीक है, जिसको चोट लगी है, जिसको उठाना है, उसका सामान उठाना है, देन यू आर कॉट. सो basically, I would say it's most important is being part of a team, you fitting in a team. आपका Hmm. एटीट्यूड इस हिसाब से होना है कि आप कितनी बार सिर्फ जूनियर, एज ए जूनियर नहीं, एज ए सीनियर भी. मतलब देयर हैज बीन टाइम, मतलब आई वाज सीइंग अ मिलिट्री लेफ्टिनेंट कमांडर एंड मैं बिल्कुल शिफ्ट लेकर के आई हैड इट कि मैं इसको तो खत्म कर देता हूँ. Hmm. एंड मेरे साथ मेरा हवलदार ही से ठक साहब, जल्दीबाजी मत करो, मिलेगा हमें, आप यहाँ से करोगे बाकी निकल जाएंगे, जस्ट डोंट डू इट. Hmm. I said, okay, boss. मैं ऑफिसर हूँ यार. एंड I was a senior major. I was about to become a lieutenant colonel. And he says, साहब जल्दीबाजी नहीं, मिलेगा हमें. Hmm. सुनना पड़ेगा. नहीं, आप समझ रहे हैं, मतलब हु डजंट माइंड, हु इज पार्ट ऑफ वो. एंड आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, उसका Hmm. एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट. यू हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स. ये नहीं कि मैं जो बोलूंगा यही होगा. सो बेसिकली बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की वो नहीं है. यू यू हैव टू बी आउट देयर टू हेल्प पीपल एंड अचीव समथिंग. जो अच्छा फुटबॉलर, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, जो एक साथ मिल करके जो पास करके गेम बना करके गेम Hmm. खेलता है, ताकि एक टीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है. आपको टीम चाहिए. आपको Hmm. टीम चाहिए जो एक साथ लड़ करके, एक साथ आपके स्ट्रेटेजी को समझ करके पूरे टीम को उठा करके अचीव करे. सो दैट इज Understood. व्हाट बेसिकली वी आर लुकिंग एट. बट अगेन सिर्फ टीम टीम है और आप खेल नहीं पाते हैं फुटबॉल, तो आपको फुटबॉल टीम में तो आपके लिए जगह नहीं है ना. Hmm. तो इसीलिए यू बेसिकली नीड somebody who can the physical aspects it comes. आप आपका अगर माइंड स्ट्रांग है तो आपका फिजिकल तो अपने आप बन जाएगा. Hmm. यू डोंट गिव अप, तो आपका वो बन जाएगा. दैट्स नॉट टू ह्यूज. आप Hmm. एज इट इज मोटिवेटेड है ना, तभी तो आप आए हैं स्पेशल फोर्सेस Hmm. के लिए. Understood, sir. तो इफ आई एज्यूम दैट योर दिस थिंग इज गुड एंड यू आर एमिनेबल, वी डोंट वांट पीपल जो खड़ा होकर के नहीं सर ये तो ऐसे ही ऐसा होता है. Hmm. नहीं, देयर आर वेज टू कन्वे दैट. एंड बाकी घूम फिर के पूरा दिमाग का गेम है. तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर दैट. Yeah, yes, sir. Yes, sir. So if you could also speak about, your experience when you first jumped out of an aircraft as a paratrooper. So if you could express your experience, how was it? I've seen some of your photos doing skydiving as well. Yeah, I was fortunate to do skydiving as well, but वो that is a completely local unit के Okay. अंदर ही we were getting helicopters. Hmm. एंड सीओ ने बोला करेगा, मैंने बोला बिल्कुल करूंगा. मुझे ना सीरियसली बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म वो नहीं था जंप्स के लिए. मैं काफी डरता था. बट आई ओनली डिड कि अगर उस समय थोड़ा सा माहौल बन रहा था, अगर एक ऑपरेशन आता है यूनिट को, एंड फ्री फॉल स्काई डाइविंग गिव्स यू लॉट ऑफ एज. Hmm. कि ना आप 20 30 40 किलोमीटर यू मे बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू एन एरिया एंड देन डू एन ऑपरेशन. मैंने कहा कल अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन होता है तो यार कश्यप जाएगा ही नहीं यार. Hmm. बाकी लोग चले जाएंगे, बोलेगा तू क्वालिफाइड नहीं है. तो सिर्फ उसके लिए कि मेरे को ऑपरेशंस के लिए आई हैव टू मेक माई सेल्फ केपेबल ऑफ गोइंग ऑन एनी डैम ऑपरेशन. तो आई डिड दैट स्काई डाइविंग. अपने वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आए थे एंड खुद ही लोकली हमने किया, डन. एंड एक साइड से मेरे सीओ ब्रिगेडियर शेखावत वाज Okay. होल्डिंग मी. Yeah, he was supporting me. He's a completely motivated, मतलब out of the world guy, true special forces gentleman. तो एक साइड से वो, एक साइड से प्रमोद शिंदे. Again, he was a master of skydiving. Hmm. He's an instructor and he's master, मतलब he had thousands of jumps. So इन्होंने खुद गाइड किया. तो yeah, coming back to my first jump was pretty scary, but Hmm. मतलब it was like हमें एनडीए में वो 10 मीटर जंप कराता है तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि डर तो उसमें भी लगता था. मैंने कहा बट रुकना तो है नहीं, जब बोला है सबको जंप करना है तो सब कर रहे हैं, इतने लोगों ने किया है तो यू हैव टू डू इट. दैट्स हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ व्हेन यू गो. एंड व्हेन यू सिटिंग ऑन द एयरक्राफ्ट एंड लुकिंग एट एवरीबॉडीज फेस, सब एक दूसरे को देख रहे हैं एंड हर कोई आपके पास, वो आप बेसिक जंप के लिए गए हैं, सब सब पहली बार जा रहे हैं. इट्स अ साइट टू सी. मतलब Hmm. पसीना टपक रहा है सबका, स्माइल कर रहे हो सब, वो हल्का हल्का मुस्कान. और नहीं, when you on that aircraft they don't give you time to think, because Hmm. if you think you may be able to scare you, you probably end up scaring Hmm. yourself. they don't give you time to think. तो आपको बिजी रखते हैं, छतरी माता की जय, Hmm. ये वो कराते फिर suddenly you go, you check everything, you keep checking, keep checking, keep checking, and then suddenly
yellow on, green on, and and then you dive and you just jump. I feel the first jump, made the say, a lot of people don't agree with this, but I found the first jump to be most difficult. Just jump, na, you don't know what's going to happen. Hmm. Okay, but once you have done that, फिर तो मतलब there was no fear. So immediately you could just go deposit your parachute, get onto a closest vehicle, go again, pick up another parachute, Hmm. come and jump again. मतलब जितने आप उस समय jump कर, same thing about skydiving. The first jump was like यार क्या होगा, am I good enough? मैं क्या respond कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? So there are a lot of queries in your mind. But once you have gone through it, and then you're not scared. तब आपको पता है कि exactly कैसे करना है. Understood. Jumps. It's a very important thing. Army के अंदर, I would say कि everybody should do that. Uh, it it uh, it it helps you overcome your fears. Hmm. जो आपके सबसे ज्यादा फेयर हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम तो कुछ भी नहीं करते हैं यार. जस्ट इमेजिन पीपल लाइक लियोनार्डो दा विंसी, Hmm. जो अपने कॉन्सेप्ट बना करके खुद ही पैराशूट बना करके Hmm. अपने उससे जंप करने की कोशिश करते थे. जस्ट इमेजिन यार, हम तो क्या है उनके सामने. Hmm. हम तो सच ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग को वी आर डूइंग इट. Yeah. या. So if you could also speak about, when you were a young officer and you went for the first combat, how was that experience for you? I think you went with the JAT or with the special forces. No, with JARTs as well, I had gone on a lot of patrollings and all along the line of control. Ambushes में तो हर रात ही हम जाते थे. We were staying outside. And but I did not see contact. मतलब Hmm. वहाँ पे कोई fight नहीं हुआ था. Fight in a sense, they were shelling, lot of shelling हमारे post के ऊपर. That was very common affair then. Hmm. But then it wasn't a contact. So इसमें जब मैं 21 पैर एसएफ में गया, इनफैक्ट प्रोबेशन के अंदर ही आई ऑलरेडी गॉट शॉट Yeah. एक बार. Okay. सो वो ऐसा था कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एक्चुअली गॉट अ क्लोज काउंटर. उससे पहले भी मैं बड़े सारे, बिकॉज आई कुड स्पीक द लोकल लैंग्वेज, Hmm. आई कुड मर्ज विद द पीपल देयर. आई वाज डूइंग ऑल टाइप ऑफ नॉनसेंस. Hmm. मतलब ज्यादा हो जाता है तो गॉड टेल्स यू टू स्टॉप. सो दैट वाज लाइक वन ऑफ दोस. आई हैड गॉन इनसाइड one of the huge camps again, going as a uh, Probation. my backup was like, मैं नहीं weapon खरीदने के लिए आया हूँ. You Okay. wanted to get into the infiltrate into the network Hmm. and identify कि उस ग्रुप्स को weapons वगैरह कहाँ से दे रहे हैं. तो एक के पास गया, एक ने दूसरे के पास लेके गया, दूसरा तीसरे के पास लेके गया, घुमा घुमा के ना in a huge area. Then they took me to one of the camps of one of the militant organizations, uh, which was in ceasefire with the government of India. Okay. So वो वहाँ पे openly, मतलब I went had tea with them, tied up a deal with them, and they were all roaming around with weapons. Of course, those were areas जहाँ पे army भी वैसे operate नहीं कर पाती थी. And then we launched operation. A lot of things happened. So provision के time पे I was doing all this. I Hmm. was completely मैं मतलब, but I had still मतलब going and having tea was a different thing rather than actually getting into a firefight. But उसमें भी I realized कि अगर उस समय had they got an inkling किसी भी तरह से कि ये है फौजी है, ये ऐसे काम कर रहा है, I would have just disappeared because मैं बिल्कुल अकेला गया था, बिल्कुल अकेला. And I realized जब मैं गया था, carrying a pistol, just a Hmm. pistol. At times it is better not to carry a pistol or something like that Hmm. because somebody checks you and finds you a pistol. ठीक है. And that also army make that could have been very, but completely बच्चा था यार, completely Hmm. बच्चा था. exuberance थी, जोश था कुछ करने का. नहीं एकदम कि स्पेशल फोर्सेस में आए हैं, कुछ करेंगे तो lot of पागलपन I did. The operation where I got shot was again बहुत ही गलत. एंड जितनी आप गलतियां सोच सकते हैं, मैंने उतनी गलतियां की थी. Hmm. विल नॉट गेट टू मच इनटू डिटेल इन दैट, बट या. बट एक ऑपरेशन में जिसमें एकदम विच वाज अवेकनिंग, और जिसमें बिल्कुल वो पता चल गया था, दैट वाज इन मणिपुर. Hmm. That I would consider as one of the most. We had just moved into Manipur. Manipur का background ये था कि Manipur, then 2004 we moved into Manipur. Manipur was like completely liberated zone.
नहीं, वहां पे सारी ग्रुप्स ने अपने अपने दे वर रनिंग रिक्रूटमेंट रैलीज, आप समझ सकते हैं, रिक्रूटमेंट रैली चला रहा है मिलिटेंट्स, दे वर रनिंग मेडिकल कैंप्स। ऐसा हालत था पूरा एरिया, एक वैली के बाद पूरा एरिया लिबरेटेड, इट वाज अंडर रिबल कंट्रोल, मिलिटेंट कंट्रोल। तो वहां से फिर हमने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वी क्लियर द एंटायर एरिया। देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ प्लेस साजिक टंपक करके, वहां पे देयर वाज अ ह्यूज आर्मी कैजुअलिटी। व्हेन आर्मी had just gone and taken over a post, militants वहां से भाग गए थे। तो पोस्ट, तो वहां से एक पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, they were ambushed and they were very badly, मतलब दैट वाज अ बैड ऑपरेशन। एंड बुलेट प्रूफ जैकेट उतार उतार करके वो एक ऑफिसर और तीन चार जवान थे, उनको मारा गया था। सो आफ्टर दिस थिंग हैपन, तो पूरे आर्मी में ये बताया गया था उस एरिया में कि ओके, आसाम राइफल्स इन्फेंट्री, यू आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट, आप सिर्फ अपना पोस्ट प्रोटेक्शन कीजिए, आप यहीं पे रहिए, वी आर गेटिंग स्पेशल फोर्सेस टू कंडक्ट ऑपरेशन। हम्म। एंड दैट इज द टाइम, इससे पहले हम असम के अंदर इधर उधर धक्के खा रहे थे, इधर उधर मिलिटेंट्स ढूंढ रहे थे, एंड वी वेंट इनटू मणिपुर एंड वी गॉट इनटू सम सीरियस बिजनेस। वी गॉट इन, एंड मणिपुर वाज लाइक, हम इससे पहले वी हैड इवन ऑपरेटेड इन वैली, हम्म। मतलब दैट वाज बिफोर आई जॉइंड, फिर ऑपरेटेड इन वैली। वैली में 6 7 8 10 मिलिटेंट्स होते थे। यहाँ पे आकर के हमने देखा, हमारी आंखें खुल गई ऐसे करके, 70 80 मिलिटेंट्स, काउंटिंग, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5, इधर भी है उधर भी है, ऊपर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, पूरे पूरे गांव, मतलब दे हैड टेकन ओवर द एंटायर गांव, एंड द गांव वाज लाइक थिंग्स वर लाइक दैट। सो वी वर गोइंग फॉर अ रेड, वी वर गोइंग फॉर टू कैंप्स, ऐसे ऐसे करके देयर वर टू स्पर्स, इसके ऊपर वी हैड टू गो एंड डू रेड। एंड मेरी पार्टी इधर जा रही थी, मेरे साथ देयर इज अ सीनियर ऑफिसर इज कर्नल टीजे सिंह, शौर्य चक्रा Oh, yeah, बाग। yeah. और दूसरी वाली पार्टी में या मेजर नेक्टर, सॉरी मेजर तो वो तब थे Colonel शायद, Nectar, yeah. इस कर्नल नेक्टर सर, Yeah. ही इज अगेन कीर्ति चक्र, शौर्य Yeah. चक्र, हु इज ऑफ दैट सर्जिकल स्ट्राइक Yeah. फेम। तो हम दोनों, हम बिल्कुल नौ सीखे, हम सीखते जा रहे थे, एंड गोइंग क्लोज टू द कैंप वुड हैव बीन अबाउट 2 300 meters, and the first guy goes, the second guy just blows up, thump, there's a blast, एंड मुझे याद है उसकी टांगे एकदम वो पेड़ के ऊपर पे नहीं, हैंगिंग लेग्स, एंड ही जस्ट फॉल्स फ्लैट भम करके। फिर पीछे वाला, आगे वाला, एवरीबॉडी सेज सर ये द एंटायर प्लेस इज लाइक बूबी ट्रैप, आईडीज, Hmm. पूरे वो सिंपल सा मैकेनिज्म, बैम्बू को ऐसे ट्विस्ट Hmm. करके एक दो मेटेलिक वो उससे कनेक्टेड विद द बैटरी एंड स्मॉल एक्सप्लोजिव, यू जस्ट प्रेस ओवर इट, कनेक्ट्स द वायर्स एंड यू ब्लो अप। कैन यू इमेजिन उस समय वहां से निकलने के लिए आप एवरी स्टेप यू आर टेकिंग, नहीं आपको नहीं पता कि आप किसी आईडी पे पाँव रख देंगे, देयर लाइक द माइंस एंड यू ब्लो अप, यू आर द नेक्स्ट वन हु गोज अप। Hmm. नाउ वी हैड ए कैजुअलिटी, आप नॉर्मल भी अगर आप चलेंगे तो आपको आप पाँव तो फिर भी देख करके थोड़ा केयरफुल हो करके, मे बी यू कैन डू दैट, इफ इट इज डग तो एज इट इज यू कैन नॉट, Hmm. बट विथ कैरिंग For sure. समवन, Hmm. इट 6 to 8 guys, आप रोड पे कैरी कर रहे हैं तब आपको चाहिए। एंड ही Hmm. वाज सो बैडली हर्ट, उसकी पूरी आंखें, मतलब वो पूरा कचरा जा रखा था, उसकी टांगे की हालत खराब थी। एंड उसको लेकर के निकलना वो सच ए ह्यूज टास्क, एंड यू डोंट नो आपके लेग्स कहाँ रहेंगे, एंड मैं तो आपको नॉर्मल रोड पे, एंड इमेजिन यू आर इन अ बिल्कुल जंगल एरिया में, जंगल साफ करते हुए आपको अनइवन ग्राउंड, पहाड़ी, अप डाउन, उसके अंदर आपको चलना पड़े। We were completely fixated for some time. And now you know, you've tripped a ID, the militants are knowing, and they were huge, Hmm. 70 80 उस टाइप के militants होते थे, they would know कि यहाँ पे फौज पहुंच गई है, and we were like 50 60 kilometers out of away from anybody else who was close to us. अब वी वर स्टिल डिसाइडिंग कि क्या करें, कैसे निकले, कैसे पाँव रखे ना, क्या स्ट्रेटेजी वो करें। वो दूसरी वाली पार्टी के साथ फाइट हो गया, वी गॉट अ Hmm. फ्यू सक्सेस, समबडी ऑफ हमारा किसी को चोट लग गया, तो वट एवर लिटिल डाउट द मिलिटेंट्स वुड हैव हैड, वो वहां पे क्लियर हो गया कि अब तो फौज इज हियर, एंड वी थॉट दे आर गोइंग टू कम लुकिंग एट अस, वी हैड टू मूव, वी हैड टू कोऑर्डिनेट, बोथ द पार्टीज हैव टू बी इन सिंक, नहीं तो उस पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता, वी हैड टू मूव। सो we picked up Colonel TJ again, Hmm. commander like he is, खुद पर्सनली लीड करता हुआ कि डजेंट मैटर जो है, बस बी केयरफुल, देखो नीचे एंड मूव, एंड वी जस्ट मूव। थैंक गॉड, मतलब वी डिड नॉट गेट एनी अदर कैजुअलिटीज, वी वेंट एंड hit the camp, we got success, and the entire night
now we had to take the village. We had to be in the village because हमारे साथ casualty था. हम अगर बिल्कुल जंगल में उसमें ठंड में he couldn't have survived the night. So रात में आग लगा करके we were keeping him close. आग जलती है तो दिखता है दूर से. Militants को पता है कि they were staying there for that in that village since ages. And they are वो थोड़े से वो फट्टे के नीचे लेट करके इधर से आप फायर कर रहे हो रात भर. He is firing, then you are moving out, you going somewhere else, engaging. कहाँ से वो आ रहा? I swear that night was something like yeah, but it was interesting. Yeah. But वो डर या वो डर तो स्पेशली फायर फाइट से ज्यादा डर तो वो जब आईडीज होती हैं आप जब हर कदम रख रहे हैं तब आपको थोड़ा ज्यादा होता है. बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम देन वी लर्न कि कहाँ होने के चांसेस है कहाँ होने के चांसेस नहीं है. Got it. That's how you grow. Got it, sir. Next question is, I've seen a lot of your photos with various weapons. So, what was your favorite weapon whenever you went into combat? Weapon is completely a personal choice. I really loved the Tavor. But Tavor का प्रॉब्लम ये था वो 5.56 है तो 5.56 से मिल्टन वैसे उसमें मरता नहीं है तो मजल वेलोसिटी इज वेरी हाई. बट बहुत छोटा सा बुलेट होता है तो आई पर्सनली रियलाइज दिस. सो अदरवाइज टेबोर इज एक्सट्रीमली गुड वेपन. मतलब इट्स वेरी नाइस टू होल्ड. नॉर्मली क्या होता है ना आपका जो फायरिंग स्टांस होता है फॉर गुड फायरिंग द एंटायर थिंग इज ऑन योर राइट शोल्डर एंड लेफ्ट इज जस्ट फॉर सपोर्ट. सो टेबोर लेट्स यू हेल्प मतलब हेल्प्स यू विद दैट कि आपका बहुत अच्छा वो बनता है. एंड एज यू आर गेटिंग इट आप आपका देयर इज अ प्रोविजन कि आप यू कैन गेट योर सेफ्टी कैच ठक से करके ना तो दिस मूव यू कैन गेट योर सेफ्टी कैच एंड यू कैन फायर. ये एके के साथ नहीं है. एक एके एनीबडी मतलब लॉट ऑफ पीपल प्रेफर एके सबका अपना वो है. बट एके में क्या है हम जैसे स्पेशल फोर्सेस में आपका जो ये पिस्टल ग्रिप वाला हाथ है ना यू कैन नॉट रिमूव दिस. इफ यू रिमूव दिस यू कैन फायर. उसको करके पूरा का पूरा गेम ही आपका ना योर होल्ड एंड योर फायर. दिस इज द गेम. एंड you're गेटिंग अप आपका सेफ्टी कैच ठक से फायर एंड you're फायरिंग. दिस एके के साथ नहीं है. इफ एनीबडी हु इज फायर्ड एके एज यू गेट इट अप यू हैव टू रिमूव दिस हैंड मूव इट सेफ्टी कैच को नीचे करके और यू कीप इट इन सेफ्टी होल्ड व्हिच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड ड्रिल जिसमें आप सेफ्टी कैच को बर्स्ट में या बर्स्ट तो अगेन होना ही नहीं चाहिए. आप उसको सिंगल शॉट में करके रखें. VZ was a very fine weapon. We had M58 VZs, which was a very fine weapon, which was again 7.62. So my personal favorite was VZ. But again, VZ में हमें night sights के लिए you have to mount night sights. Whereas Tavor with the night sight, you just mount additional sights, the collimator sights. VZ में क्या था ना आपको VZ में ऐसा safety catch था. So we extensively practiced कि आपका without even removing आपका ना पिस्टल ग्रिप पे हाथ है. एज यू आर रिमूविंग यहीं से आपको वो ठक से हो जाएगा एंड विदाउट इतने कम टाइम के अंदर फट से आपको जब फायर करना है तो आपका ये हाथ का पोजीशनिंग थोड़ा सा लूज टाइट पूरा आपका एम इज कंप्लीटली वन दिस दो यू आर नॉट एमिंग यू आर जस्ट अलाइनिंग एंड देन यू आर फायरिंग. सो विजेट के ऊपर दैट थिंग वाज वेरी गुड. बट विजेट के ऊपर प्रॉब्लम ये था कि विजेट वी वर ऑल डूइंग अलाइनमेंट फायरिंग. We were as good. मतलब you don't even have to aim and just tap you can engage. Tavor was an advanced weapon. Tavor में there's a collimator sight, red dot sight, जिसके अंदर you can keep both your eyes open. ठीक है. कॉम्बैट में जो सिखाते हैं कि you can't जो अर्जुन का आपको पता है ना अर्जुन he focuses only on that चिड़िया की आंख. तो ये मैं हमेशा अपना उसको बताता था कि अर्जुन could afford कि वो सिर्फ चिड़िया की आंख के ऊपर फोकस करके फायर कर सकते हैं. बट इन combat that was a competition. In combat you cannot do that. You cannot focus at one point. You have to have everything, the entire situational awareness. बिकॉज आपने अगर एक के ऊपर अगर फोकस कर दिया यहाँ पे आपके पास है कि आके ग्रेनेड फटता है यू वोंट नो कहाँ से आया. आप समझ रहे कहीं और से किसी ने फायर किया यू डोंट नो. सो यू नीड टू कीप बोथ योर आईज ओपन. यू नीड टू सी द एंटायर थिंग एंड देन एंगेज. सो टेवोर हेल्प्स यू विद दैट बिकॉज टेवोर के जो साइड्स हैं वो साइड के अंदर रेड डॉट दिखता है. यू नीड टू कीप बोथ योर आईज ओपन एंड जस्ट अलाइन दैट रेड डॉट. इट मेक्स फायरिंग वेरी मच सिंपलर. नाइट साइड के साथ यू जस्ट माउंट अ नाइट साइड एंड देन यू फायर व्हिच बिकम्स अगेन very simple.
which was a problem with VJet. Hmm. VJet मतलब जो हमारे स्पेशल फोर्सेस वालों के लिए तो अच्छा है कि यू ऑलरेडी ट्रेन, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, आपके साथ ही है, दिन भर आप फायरिंग ही कर रहे हो, यू जस्ट नो कब कहाँ कैसे वो कर रहे हो। बट किसी नए या ज्यादा लोगों को अगर सिखाने के लिए है तो दैट वे आई वुड से द साइड्स ऑफ द टेबल वाज वेरी गुड। Hmm. बट अगेन प्रॉब्लम सब में होती है तो उसके कैलिबर छोटा है। Hmm. So that's my take on. Otherwise, it depends on what kind of a task it is. If you have to go for a room intervention, you'd Hmm. probably prefer a MP5 Hmm. Heckler and Koch. Yeah. So weapon is ठीक है, मतलब अपना अपना वो है. Hmm. Yeah. Understood. I hope I answer that. Yeah, yes, sir. So yesterday was Major Deswal and also Colonel Santhosh Mahadik's birth anniversary. You spoke about the operation Yeah. that you went with Deswal, sir. If you could speak about, your experience with Colonel Santhosh Mahadik as well. How was that? Madik sir was a soldier. Completely जैसे किसी स्पेशल फोर्सेस सोल्जर को होना चाहिए. Completely disciplined and focused. यारों का यार. It was मतलब अब मैं रोने लग जाऊंगा because sir was an idol. बहुत ही सज्जन वो थे. आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑपरेटिंग विथ हिम एंड ही हैज बीन सच ए नाइस जेंटलमैन. एक एक चीज सुन करके मतलब हम वी वर वेरी जूनियर बट येट ही वुड ऑलवेज लिसन टू अस. ही वुड इम्प्लीमेंट जो हमारे आइडियाज हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से लेते थे एंड ही वुड इम्प्लीमेंट. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑपरेशंस में, कैसे चलना है, कैसे वो करना है, कैसे आड़ पकड़ना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है. ही वॉज अ ग्रेट टीचर. And when I was again, I started operating and I was doing all this nonsense इधर उधर करके ना, वो जो मैं आपको बता रहा था पहले, monkey tricks and Hmm. all that. So he was the adjutant then, and he would have such a calming effect. Adjutant is like he's running the entire show, and Hmm. हम तो सीओ से तो बात ही नहीं कर सकते थे, इतने सीनियर होते थे तो हम डरते Hmm. थे. We would always talk to the adjutant, and he would always have a calming effect. And I remember he would always tell me कि कश्यप, you will kill everyone. तू ज्यादा वो करता है, just relax. थोड़ा सा धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, मतलब Hmm. जस्ट रिलैक्स. यू आर मूविंग एट अ वेरी हाई वो, एंड ही वुड जस्ट काम मी कि ठीक है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. आई मैं कभी सोचता हूँ तो आई रिमेम्बर हिम एंड आई से कि ओके कश्यप, जस्ट रिलैक्स. Hmm. It's a huge loss to the army, to the nation, and can't even say to the family. So, and a lot of respect for ma'am for Yeah. having overcome all that and make a place for herself. We are all so proud of her. Hmm. Yeah. Got it, sir. In parachute regiment, you have even seen your photos. You have a Balidan badge. You wear a maroon beret. So if you could quickly signify, what is the significance of a Balidan on the maroon beret? Maroon Beret is for paratroopers, whoever's been able to jump off an aircraft. Not just that, with that, you have to be part of a parachute battalion for some time and all that. So it signifies a paratrooper. With that comes the जो चिड़िया कहते हैं, The paragon. the wings. Yeah. That shows you are a paratrooper. The Balidan is for the special forces. अभी तो the parachute regiment, all the battalions have converted into special forces. Hmm. हमारे time पे special forces were limited and there were other para battalions. So Balidan is a very important. It's, I would say, the most coveted badge that one can have. Balidan, as the name signifies, ki Balidan, matlab Sacrifice. sacrifice. It is. I have already. You have accepted that you have sacrificed yourself for the nation. Hmm. Now you will undertake anything and everything that is required. मतलब आप अपने अपने आप को sacrifice कर दिया है. That is what it signifies. And you wear it on your right chest, and people can give life or take life for the Balidan badge. Hmm. It's very. मैं अभी after retirement, the what I miss most is my Balidan badge. I Hmm. would love to wear it again, Yeah. but then I'm not permitted to. Got it, sir. Sir, Yeah. after that you went to NSG. So you were part of that. So did you give a probation again, or how does that work? No, no, I did not do my Okay. probation again. It is because I went for commanding of Okay. the unit.
So as you go for a group commander, तो उसका selection अलग होता है. Okay. First of all, I got approved for the rank of colonel. So the first thing, or for that matter, anyone who is commissioned into unit always aspires to command that unit. उसको लगता है कि CO is like ultimate. मतलब CO, आप एक यूनिट का CO, और हमने जिंदगी में देखा ही क्या, 21 पैरा एसएफ देखा, तो हम चाहते थे कि हम 21 पैरा एसएफ का कमांड करें. बट 21 पैरा एसएफ में उस समय CO कर्नल संजय कार्की सेना मेडल थे. तो बिकॉज ही वाज CO एंड ही जस्ट टेकन ओवर, एक साल पहले उनका टाइम नहीं हुआ था, तो आई हैड टू गो आउट समवेयर. सो इनिशियली रेजिमेंट के अंदर ही रहना था, बट देन फिर एनएसजी के लिए somebody gave my name कि इसको भी कंसिडर कीजिए, एंड आई गॉट अप्रूव्ड. सो वंस दैट हैपेंस, तो यू गो एंड टेक ओवर द बटालियन. Understood. Understood, And sir. it was a different exposure, completely different, and it's again eye opener. मैंने तो स्पेशल फोर्सेस में तो आप एक जंगल में जाकर के ऑपरेशन करते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम अलग अलग तरह के अलग अलग चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं. Energy was is at a central stage. It is all your operations are going to be completely limelight में, completely under camera, and वो तो उसके रिpercussions भी बहुत ज़्यादा हैं. इफ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन का कुछ छोटा मोटा वो होता है, तो दे में भी चांस ऑफ गेटिंग अवे या नहीं कुछ. बट एनर्जी का ऑपरेशन इज लाइक द प्राइड ऑफ द कंट्री. अगर आपका ऑपरेशन कहीं किसी तरह से फेल होता है, तो मतलब पूरी कंट्री बदनाम हो जाएगी. कल पाकिस्तान से लेकर के सारे कंट्री वाले हंसेंगे कि ये देखो डेवलप कंट्री आई, ये देखो इनके आर्मी का स्टैंडर्ड ये है कि इनके यार एनर्जी कमांडोज वो करते हैं. दिस लॉट ऑफ टाइम प्रेशर, 26/11 अटैक हो गए, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कितना टीडियस या कितना वो प्रोसेस है एक इतने बड़े बिल्डिंग को क्लियर करने के लिए, विद होटल विद अबाउट 800 रूम्स. इट्स नॉट इजी. उसको बहुत टीडियस और वो काम है. बट देन देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल अंडरस्टैंड दैट. सबके साथ वो होता है कि यार कितने जल्दी आपने मिलिटेंट्स मार के खत्म कर दिए, कितने जल्दी मिलिटेंट्स मार के खत्म कर दिए. आपको पता थोड़ी है मिलिटेंट्स कहाँ पे, वो 850 रूम को एक तरफ से आपको एक सीक्वेंशियली आपको सर्च करना है. एक रूम को आपने सर्च करके आगे निकल गए हैं, somebody else में, if you have not secured it well, somebody else will come and occupy that यार. 850 रूम को अगर आपने एक एक बंदा भी अगर हर रूम में खड़ा करना, तो एक इन्फेंट्री का पूरा बटालियन तो आपको उसी में चाहिए होता है. So there are a lot of what I'm trying to say is you are forced to operate within a time frame when the complete media, again media is unforgiving. Media से लेकर के everybody is watching you. जिनको नॉलेज है, जिनको नॉलेज नहीं है, सब आपको देख रहे हैं. And so it's like that. Understood, sir. Sir, I've seen your photos with Brigadier Bhupesh Hada, sir. Very famous. It has gone. It has almost gone viral. So, if you could speak about your experience with him when you were in NSG. Yeah, Hada sir was my immediate superior. He was the force commander. NSG में अलग-अलग units हैं, and then there's a force headquarters. Force headquarters is ideally like a brigade headquarters, but that is why it is commanded by brigadier. But it's larger than a division as well. Actually, इतने सारे units हैं उसके अंदर, इतने सारे वो हैं, and I was privileged or honored to have served under somebody like Brigadier Bhupesh Hada, a fantastic gentleman. मतलब एक तो वो खुद राजा हैं बूंदी के, तो उनके हर मैनरिज्म में उससे वो राजा हैं. जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप पूछ रहे थे, तो उसमें कुछ किंग लाइक क्वालिटीज हैं, तो वो सर में है. तो ही इज रॉयल इन every meaning, every sense of the word, and again a completely passionate Fauji and a special forces guy. Very rarely मतलब इतने सीनियर ऑफिसर को इतना वेपन्स से लेकर के इतने छोटी छोटी चीजों के बारे में, ड्रिल्स के बारे में पता होता है, जो मैंने सर के अंदर देखा. So it's completely focused, and his thought process and is so different, so unconventional. मतलब you can sit with him for hours and उनके आप ज्ञान लेते रह सकते हैं, because he's very knowledgeable. सब चीज़ के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, and I really
been honored to have served under him, and I have got to learn a lot. Matlab, it was a really eye opener working with him. Understood, sir. So, from your experience in the Indian Army, in the SF, and in the NSG, if I can ask you any three life lessons that you have learned, which you still cherish, what would they be? Any three? या सबसे पहले नेवर गिव अप, वो द फर्स्ट, एज आई सेड, मतलब बार बार कि डोंट गिव अप, ठीक है. सेकंड इज फाइट स्मार्ट. ये मैं काफी बार बताता रहता हूँ कि यू नीड टू फाइट वेरी स्मार्टली. आप माय माय मोटो इन माय लाइफ हैज बीन कि ओनली फूल्स फाइट फेयर. Hmm. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बैट, अगर बिकॉज यू आस्क्ड अबाउट वो, तो कॉम्बैट में ओनली फूल्स फाइट फेयर. तो the idea is कि you have to cheat your enemy. If you don't cheat your enemy, you get into a fire fight, तो आपके भी कैजुअलिटीज होंगे. और आपके कैजुअलिटीज मतलब आपके साथ वाले जो आप दाहिने बाएं, Hmm. जो आपके भाई हैं, दे विल गेट इंजर्ड. सो इट इज कंप्लीटली अ माइंड गेम. चाहे वो एनर्जी वाला हो ऑपरेशन, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस वाला ऑपरेशन हो, चाहे वो नॉर्मल वॉरफेयर हो, यू ऑलवेज प्लेइंग विद योर एनिमीज माइंड. यू हैव टू चीट हिम, यू हैव टू चीट हिम टू विन स्मार्टली. सो आई कैन अगेन, ये एक अलग ही टॉपिक है जिसके अंदर मैं बहुत आपको लंबा वो दे सकता हूँ. Thirdly, I would say there are two things. Planning. Hmm. Again, as we were discussing about Planning preparation for exit. staff Yeah. college, Yeah. जब मैं बता रहा था, या preparing for your SSB interview or preparing for any exam, you have to plan. आपको पूरा structure, पूरे analysis करना है. क्योंकि आप प्लान किए बिना मेहनत करना शुरू कर देते, जो मैं आपको चौक है वो चीज एंड द रैट की बात कर रहा था, कि एक तरफ से आप खाना शुरू कर दो बिना प्लानिंग किए हुए, तो इधर आप खाते खाते अपने पेट फोड़ दोगे. Hmm. आपको पता नहीं आपको कितना खाना है, कब ब्रेक लेना है कि नहीं. तो यू हैव टू मेक अ कंप्लीट प्लान. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट important is the execution part of it. Hmm. or whether be it operations, whether be you're preparing for a competitive exam, चाहे आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्टार्टअप के लिए तैयार कर रहे हैं, एक बार आपका प्लान फॉर्मलाइज हो जाए, तो उसमें दुनिया में 50 चीजें और भी हैं. बट यू हैव टू बी फोकस्ड नाउ कि भैया मेरा प्लान तैयार हो गया, ये मेरा चार्टर है. मैं सुबह 7 बजे से उठ करके 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, हर दिन मैं ये करूंगा, ये मेरा रूटीन है. तो अगर 8 बज गए हैं, तो आपने आकर के, या लेट्स से 7 से 8 आपने पढ़ना था, आधा घंटा ब्रेक है, 8:30 यूल कम बैक एंड सिट. 8:30 हो गया, यू कम बैक एंड सिट मैन. Hmm. दिस इज डिसिप्लिन. सो इन एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन. आप एक बार आपने डिसाइड कर दिया, उसके बाद यू कीप ग्रोइंग, कीप बढ़ाते रहो अपना चार्टर. तो यू आर नॉट एंडिंग अप एनीवेयर, आप अपना कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे फिर. Hmm. It's very Understood. important to be focused. So four things: never give up, I would say, and fight smart, and planning and execution. Execution part is completely up. Whatever you have planned, कि कितना hours कैसे पढ़ना है, क्या आपने अचीव करना है. दुनिया में जो आइडियाज लोग Hmm. कहते हैं सक्सेस होने के लिए, आई एम नॉट येट सक्सेसफुल आउटसाइड द आर्मी, तो मैं ज्यादा उसमें कमेंट करने के लिए मेरा बनता नहीं है. बट वट एवर लिटिल आई नो, आई टेल यू. दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए लोग कहते हैं कि आइडियाज Hmm. इंपॉर्टेंट है. बट आप बाहर देखेंगे, आपको आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट बाहर आइडियाज की कोई कमी भी नहीं है कि नहीं. यू स्टार्ट लुकिंग, इन 3 days you will be able to come up with 300 ideas of what you should do and how you can succeed. Hmm. But not everybody can succeed. Why? Because it is about execution. Hmm. आप समझ रहे हैं, आइडिया, एक आइडिया होना अलग बात है, और उसको एग्जीक्यूट करके उसको एक Skill. पूरे प्लान के तरीके से कंप्लीशन तक ले जाना, टू Hmm. ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, इज अ डिफरेंट वो. एंड नॉट एवरीबडी कैन डू इट, एंड दैट इज वेयर सबसे ज्यादा हमारे फेलियर्स या सबसे ज्यादा वो होते हैं. दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड लाइफ, एंड जो मैं समझ पाया हूँ. सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप प्लान कीजिए अच्छी तरह से, Hmm. एंड फिर जान लगा करके एग्जीक्यूट कीजिए, दाहिने बाएं मत भटके. एक और हाँ, दैट स्ट्राइक्स मी इज, यू हैव सीन दैट मूवी फॉरेस्ट गंप. Yes. या जो लाल सिंह चड्ढा, जो Yeah. They're हमारा trying to remake. मेक, उस मूवी में आई आई डोंट, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज उसमें. I'm not too huge a fan of movies and all, but ये message I had seen that, then I
read a lot, so I realized Jack Ma, the Chinese businessman, again the billionaire, he also saw the same thing, and he has been mentioning it number of times. So इसीलिए मेरे को लगा this is again important. That movie, it says कि आप अपने mind को simplify रखिए to be successful. Just simplify your mind. आपको ज्यादा पॉलिटिक्स, ये वो, ऐसे करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसे करूंगा ये करूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे कर देगा, नथिंग यार. वो चड्डी बनियान बना था तो चड्डी बनियान बना रहा है. दैट गाइस इनटू शिम्प फार्मिंग, तो वो शिम्प्स के पीछे पड़ा तो पड़ा हुआ है. इवन ही सेज कि रन करना है तो यू जस्ट कीप रनिंग, यू डोंट हैव टू बॉदर कोई और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है. सेम थिंग जो एसएसबी में भी मेरे साथ हुआ था कि ये पढ़ लो, तूने इसके बारे में पढ़ा, तूने उसके बारे में पढ़ा. कीप योर लाइफ सिंपल, कीप योरसेल्फ फोकस्ड, keep planning and keep executing. Got it. Got it, sir. That I would say would be my little, whatever little advice I can. Got it, sir. Thanks a lot, sir, for spending time and sharing your experience from the NDA life till the SF and the NSG and thereon. I think a lot of people who will watch this will get a lot of insight about your life and how they can steer their life and get some direction. So thanks a lot again, sir, for your time. Jai Hind, sir. Thank you so much, Akash, for bringing me on your show, and I really loved it interacting with you. And it'll make me really glad if किसी को भी कोई भी छोटा मोटा फायदा हो जाए by whatever I have said. And yeah, if I have to say something again, I would say stay motivated, man. Everybody stay motivated. अभी आप सबका लाइफ शुरू हो रहा है, इवन मेरा लाइफ शुरू हो रहा है, आप सबका लाइफ शुरू हो रहा है. हम कभी भी आप इवन इफ यू आर 60, मतलब आपका लाइफ शुरू होने के लिए कोई वो नहीं है. सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप डूइंग वेल. Yeah. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. थैंक यू आकाश. Bye bye.